শিশু তবু রোজ রোজ একই ঘটনা। আর পারছি না। এবার মেয়ের বিয়ে দাও। মাত্র 11 বছর বয়স, এখন বিয়ে দিলে রেখা বাঁচবে না। এখন মা হলে ওর শিশুও সুস্থ হবে না। আপনারা কি তাই চান? না, এই হলো রেখা কালিন্দী। ও জানে ওর শরীর বা মন বিয়ের জন্য তৈরি না। ওরা না বলেছিল, শুনেছিল গোটা দুনিয়া। Tiny candle flame can wipe darkness to brilliance. The strength of encouragement can turn dejection to enthusiasm. A simple act of responsibility can turn sorrow to smile. We are brilliant, strong, and responsible. One nation, 12 states, 12 locations, 12 years, 300,000 beating hearts, one humble organization, Lanco Foundation. Lanco Foundation, an organization with a big heart. Can you hear our beat?
where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father. Let my country awake. I think we'll all agree that almost every day we listen or we read about or we see on television violence, bad news about people dying, people being killed through natural calamities or then human-made calamities, malnutrition, disease, and of course we all feel terrible about it. We all feel that this should not happen, and there has to be change. There has to be a better way to living than this. But again, we feel there's very little we can do individually, and also, as listening, seeing, encountering bad news is becoming a habit, so is ignoring it and carrying on with our lives becoming a habit. Somewhere this of course is a form of violence, be it the obvious kind of violence where, say, the Bombay attacks, the terror attacks in Bombay, or the various cases of rioting and killing and encounter kind of violences. But I think even the violence caused by nature is somewhere affected by or is a consequence to things that we as irresponsible human beings have been doing over the years. And even that violence is actually something that we have to take responsibility for. So it's all about being able to sense that there is something that we can do about this in a very little way and find the right channel that can help us help someone. In North Kolkata. Sources revealed, acting on a tip, the police, armed with a huge force, stormed the house this afternoon and seized the banned substance. 3 people have been arrested in the operation. Police is suspecting that a huge racket is involved behind this. शहर के एक नामी होटल से 3 आदमियों को गिरफ्तार किया। बाद में ये ऑपरेशन की ऑफिसर इंचार्ज ने हमें बताया कि पुलिस के पास इन तीनों आदमियों का ISI से जुड़े रहने की खबर थी। इन 3 लोगों के पास से कई जाली पासपोर्ट और 5 लाख रुपए के अलावा 2 रिवॉल्वर और ढेर सारे कारतूस।
These are the men and women who are our friends in the hours of dear need, crisis, catastrophe. These are the brave hearts who lend their hand of service in missions which have been otherwise branded impossible. They are the violent arm of the administration, a force which is trained to tackle the tough, a set seasoned to face the worst, yet a group most misunderstood and misrepresented. Crime reduction, maintenance of law and order. The Kolkata police believes these are the objectives, their mission statement, and to achieve these goals, they have been following a professional policing. অনেকগুলো ফেসিলিটি কলকাতা পুলিশ দেয় যেগুলো আমরা জানি না হয়তো, সেই জিনিসটাকে সবার সাথে পরিষ্কার করে বোঝানো যে আমরা এই জিনিসগুলো আমরা করি, সেটা তুলে ধরাই ওয়াজ দ্য হাইলাইটিং পয়েন্ট। বয়স আমার যাচ্ছে গোনা দিন আঙুলে, শিখছি কিছু রাখছি মনে যাচ্ছি ভুলে। বয়স আমার যাচ্ছে গোনা দিন আঙুলে, শিখছি কিছু রাখছি মনে যাচ্ছি ভুলে। চারপাশের এই দুনিয়া জানি জানি বদলাবে রং, বয়স যতই বাড়বে ততই পাল্টাবে ঢং। তোমরা যারা অনেক বোঝো অনেক জানো, আমার কিছু বলার ছিল একটু শোনো। তোমরা যারা অনেক বোঝো অনেক জানো, আমার কিছু বলার ছিল একটু শোনো। बिहार के कुछ हिस्सों में जीवन काफी कठिन हो सकता है। एक और जहां पानी ही पानी चारों तरफ, पर पीने के लिए एक बूंद भी नहीं। बाढ़ के समय यहां जिंदगी मानो थम सा जाता है। दूसरी ओर कई जगह पर पानी का एक बूंद भी मिलना कठिन हो जाता है। सर्दी में बहुत ठंड और गर्मी में सूखा जीवन को और भी दुखमय बना देता है। इन सब के ऊपर है गरीबी, अभाव। अगर आप बिहार के इन छोटे छोटे कस्बों में जाएं, तो इन लोगों के दुख से आप मुंह नहीं फेर सकेंगे। इन सब कठिनाइयों के चलते कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी तरह हालात को सुधारने में लगे हैं। इन लोगों और संस्थाओं में से ही एक है निर्मल महिला कल्याण केंद्र दरभंगा, जिसने यहां के लोगों की जिंदगी में काफी सुधार लाए हैं। निर्मल महिला कल्याण केंद्र CIC सिस्टर्स द्वारा परिचालित एक स्वैच्छिक संस्था है। वे क्या काम करते हैं, ये आप उनसे ही सुनो। Development and progress is possible only when people look forward. Just as when you look away from the sun, you see your shadow. In the same way, when you look at the sun, your entire self is illuminated.
The mind and the body vibrate with the radiance of hope. Enthusiasm, strength, and courage fill the heart that makes it indomitable. New avenues are opened, new doors of progress are unlocked. Chakramonath and Mustafapur under Chak Bhrigu Gram Panchayat in Balurghat Development Block, Dakshin Dinajpur have done just that. They have looked forward. They rose from past, shook off the dirt of uncertainty that burdened them for years, and unlocked the door of prosperity and shaped their destiny. পোলিও রোগ পৃথিবীর বহু শিশুকে পঙ্গু করে দিয়েছে। এই রোগ একবার হলে আর সারে না। কেবলমাত্র পোলিও টিকা খাইয়েই এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। এখনো পর্যন্ত ভারতবর্ষ সহ মোট 7টি দেশ, এই 7টি দেশে এখনো পোলিও রোগ আছে। পশ্চিমবঙ্গকে পোলিও রোগ মুক্ত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আবেদন জানিয়েছেন।